करने हैं। You may include with the help of smart meters, smart appliances, renewable energy resources, and the some energy efficient resources as well. So power conditioning और जो आपकी control of the production है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी स्मार्ट ग्रिड में। जो अगर स्मार्ट ग्रिड की हम पॉलिसी की बात करें तो ये सबसे पहले यूरोप से स्टार्ट हुई, या मोर प्रिसाइसली यू कैन से फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर हम कहना चाहें तो ये गलत नहीं होगा कि स्मार्ट ग्रिड का मतलब है कि आप अपनी पावर क्वालिटी या जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको आप कह सकते हैं कि आप डिजिटल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। सो यू कैन से दैट इट वाज द पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियली कि अपनी जो नेशन की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिलायबल और सिक्योर बनाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने स्मार्ट ग्रिड इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंफॉर्मेशन और कंट्रोल टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ताकि रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी जो इलेक्ट्रिक ग्रिड की है वो इंक्रीज कर सके। इसके अलावा जो ऑप्टिमाइजेशन है ग्रिड ऑपरेशन की या रिसोर्सेज की वो बेहतर की जा सके विद फुल साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज एंड जनरेशन कैन बी देयर, and there can be some inclusion of DGs. DGs आप इंशाल्लाह पावर सिस्टम ऑपरेशन अगर हमने पढ़ा तो उसमें भी इसका जिक्र करेंगे कि कैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह को ऐड करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ स्मार्ट एनर्जी मीटर्स चाहिए होंगे, हमें कुछ इंटेलिजेंट डिवाइसेस चाहिए होंगी जो क्या करें आपको अवे फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप डाटा कलेक्ट कर सकें और इसीलिए तरह आप रिमोटली जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं उनको भी आप ऑपरेट कर सकें। सो वी कैन से दैट इट इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इन रियल टाइम या ऑटोमेटेड या इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके फिजिकल ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेज हैं या कंज्यूमर की जो डिवाइसेज हैं फॉर मीटरिंग के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए रिगार्डिंग द ग्रिड ऑपरेशंस और स्टेटस, उसको क्या करें ज़्यादा स्मार्ट कर दे। सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड पीक शेविंग टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। तो इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम IED का नाम दे देते हैं। IED मीन्स दैट देयर कैन बी सम इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एज वेल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्मार्ट ग्रिड। तो व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो ग्रिड, कैसे स्मार्ट ग्रिड जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनाइट करता है, कैसे विद द हेल्प ऑफ IED इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की मदद से हम कोई भी SCADA सिस्टम यूटिलाइज करते हैं, विच इज द एब्रिविएशन ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, आगे डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न एप्लीकेशन की तरफ जाएं तो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। व्हाट इज द केस स्टडी ऑफ द स्मार्ट ग्रिड, व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर, एंड एट द एंड वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक एज वेल। इसी तरह स्मार्ट ग्रिड की अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में तो ये बहुत वाइडली फेमस है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, बिकॉज एज एन इंजीनियर you have to decrease your power losses and you have to decrease your fuel costs at the end. This is the main objective of your power system operation. So a smart grid is a modern electric system. It is used in developed countries like USA, Japan, China and other European countries, and at the end we have to improve the reliability, efficiency, safety. We have to reduce the pollution by using the renewable energies. तो आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि आपने फैसिलिटेट करना है अपने कंज्यूमर्स को रिगार्डिंग द कनेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द साइजेस, और आपने कंज्यूमर्स को भी पार्टिसिपेट करवाना है कि वो रोल अदा करें किसी भी जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज करने का। तो इसके लिए
फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आजकल सोलर पैनल रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब ऑन ग्रिड सोलर कंसेप्ट भी आ चुका है बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है कि आप जो सोलर पैनल लगाएंगे वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड, तो वो आपको पे किया जाएगा या आपकी बिलिंग जो है वो कम आएंगी। इसी तरह जो डिफरेंट कंट्रैक्ट हुए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट चाइनीज कंपनी से, उन्होंने कहा है कि वो सोलर पैनल लगाएंगे, ऑन ग्रिड कनेक्टेड होगा और उन्होंने इंस्टॉलमेंट जो कैपिटल कॉस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे और वो टैरिफ में से जिसका 5 या 6 रुपये पर यूनिट उन्होंने मुकर्रर किया है वो फिर लेंगे कस्टमर से। तो इट विल बी वेरी cheapest technology to be provide in पाकिस्तान। इसी तरह अगर आपने सुना हो तो डीजीज का नाम आपने सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का, वो हम डिफरेंट जगह में इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल्स या रिन्यूएबल एनर्जीज के तौर पे लगाते हैं ताकि हमारी जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो फिर इससे क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, they will get the greater information and options in digital form और उन्हें पता होगा कि उन्होंने अपनी सप्लाई कैसे बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करनी है और हमने लॉसेस को कैसे कम से कम करना है। So, अगर शॉर्ट आंसर हम स्मार्ट ग्रिड का देना चाहें तो इट कैन बी गिवन इन 2 words ओनली, IT प्लस इलेक्ट्रिकल ग्रिड। कि आपका इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उसमें आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट को ऐड कर दिया है एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर थ्रू द हाई वोल्टेज नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द इंडस्ट्रियल यूजर्स, एनर्जी स्टोरेज इंस्टॉलेशंस and you can say some consumers as well. How does this technology works? As you know that power plants are interconnected and connect in ring system to support the load. जब लोड के साथ इंटरकनेक्टेड हैं तो आपने क्या करना है, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्ट कर देती हैं जो आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में टू एंड कम्युनिकेशन करें। We can use the different communication protocols and intelligent electrical devices for this purpose to make it more flexible. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में डीरेगुलेशन की बात भी की थी कि जो फ्यूचर है उसमें मोनोपोली नहीं होगी, कि गैप को है उसी नहीं इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पावर की या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है फ्रॉम द ग्रिड टू द कंज्यूमर्स। There can be multiple companies और उसमें there can be some bidding। जब बिडिंग होगी तो उसमें बिडिंग की मदद से आप जो भी कंपनी सबसे कम बिड करेगी they can provide the electricity to the consumers और at the end कंज्यूमर को इसका फायदा होगा। तो जब ये बिडिंग सिस्टम आएगा, डीरेगुलेशन का सिस्टम आएगा, मोनोपोली खत्म की जाएगी, तो जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो ट्राई करेंगी कि जो लॉसेज हैं वो मिनिमम हो। तो मिनिमम लॉसेज होंगे तो you are seeing here that in between the transmission and distribution there are wind energies and there are some solar panels etc and there can be some different plants जो in between आपके voltage fluctuation को खत्म करने के लिए और आपके सिस्टम को ज्यादा reliable बनाने के लिए और you can say कि quality और security of supply को मेंटेन करने के लिए और existing service जो है, जो existing infrastructure है उसको efficiently improve करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हम। So you can utilize the different smart meter to record and measure the electricity, provided the consumption and price data or other signals. For example, future में ऐसा भी हो सकता है कि आप इजी पैसा के थ्रू अपना यानी बिफोर हैंड अपना बिल अदा कर, इजी पैसा के थ्रू तो सॉरी अभी भी आप बिलिंग अपना सिस्टम कर सकते हैं, बिल अदा कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पहले ही आप यानी अपनी एनर्जी मीटर को रिचार्ज कर लें, तो जब तक वो रिचार्ज रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी पर यूज कर सकते हैं और आपको वो प्राइस डाटा भी मिलता रहेगा, द सिग्नल्स भी मिलते रहेंगे। एंड द गुड थिंग इज you have to send remotely to a central data management center.
So this can be done with the help of different smart meters, जिसको हम normally intelligent electrical devices का नाम भी देते हैं. So there can be some different benefits of the smart meters. There will be accurate bills. There will be less time waiting in for the meter reader. तो आप कह सकते हैं कि आपकी मैन पावर भी कम होगी. It could help you save money and it will help you to save your time, and time is money. It will reduce the theft of the energy. और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में there are the different systems or different scenarios for the theft of the energy. Unfortunately, we could not discuss more about the theft of the energies. लेकिन इसकी मदद से आपके जो एनर्जी थेफ्ट है वो भी कम होगी, and there will be some much better faster resolution of the problems, and at the end we can go towards the micro generation as well. Now, if you are talking about the micro generation, and then there should be some question in your mind that what is meant by microgrid. जैसा कि मैंने पहले बात की डिसेंट्रलाइजेशन की या डीरेगुलेशन की, सो माइक्रोग्रिड को आप कह सकते हैं इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज एंड द लोड्स जो कि नॉर्मली ऑपरेट करती हैं या कनेक्ट होती हैं किसी भी वाइड एरिया से, किसी भी मैक्रो ग्रिड से, एंड इट कैन आल्सो डिस्कनेक्ट टू सम अदर मोड्स एज वेल. या आप कह सकते हैं माइक्रोग्रिड can effectively integrate. There are the various sources of DGs and especially the renewable energy sources. अच्छा, distributed generation की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो distributed या decentralized is an electrical generation and storage performed by a variety of small grid connected and distribution system connected devices, which are also referred to as distributed energy resources. There are the different conventional power stations which can be utilized. So अगर आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं it is an integrated energy solution that serves a group of consumers and we can buy and sell electricity from the grid as well. जो वही concept है जो हम कहते हैं कि which is regarding to the solar energy nowadays कि on grid connected आपके जो solar panels हैं. This is your solar panels, and you are seeing this is the junction box. There can be some inverter to convert the DC into the AC. जैसा कि आपको पता है कि आपके जो solar panels हैं they can produce only DC voltage. तो आप AC में convert करते हैं. This is your production meter and this is your consumption meter, और ये it is also connected to your utility grid system. तो जब आपको जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, then you can sell your electricity to the grid as well. This is the concept of the utility grid, and this is how the microgrids operate. वो लाज़मी नहीं है कि solar panel हो. There can be different renewable energy resources. For example, अगर कराची के आप साहली इलाकों की बात करें तो वहाँ पे wind energy का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो they can make use of the wind energy as well. So this is how your smart grid is uniting your transmission and distribution. This is your bulk generation. This is your transmission. Conventionally होता क्या, generation होती है transmission, distribution और customer. But now it will not be like this. But it is some deregulated system or two-way information. जैसा कि मैंने पहले कहा कि this is not the one-sided information, बल्कि two-way information है. देखिए कि आपकी जो bulk generation है, it is also connected to your markets, it is also connected to your operation, and it is also connected to your transmission. Similarly, जो transmission है वो भी operation से connected है, market से connected है. इसी तरह जो आपकी distribution है वो भी operation से, और customers भी आपके, this is your service provider. It means, यानी कहने का मकसद ये है, there are the multiple choices for the consumers, and depending upon the most favorable option they can choose. उनके पास एक option नहीं है, बल्कि उनके पास multiple options हैं for the generation, for the transmission, and for the distributions as well. And this is the electrical interface which we normally utilize, and this is the secure communication interface. And you can say with the help of intelligent devices, our IT department, we are deregulating the centralized system.
इसी तरह जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की बात की, डीजीज की बात की, देयर कैन बी सम न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो, विंड, सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल हीट, biomass system, and depending upon the scenario there can be different DGs which we may use for the generation. So distribution automation की बात करें तो it is a family of technologies which may include the sensors, processors, communication networks, and switches that can perform a number of distribution system functions depending on how they are implemented. जो आजकल की यूटिलिटीज या ग्रिड हैं, दे आर अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन अपनी रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सर्विस क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, या जो आपके ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए. So this is how your source and then transmitter, then there is some dedicated link, and at the end there is some receiver and the destination, and this is the communication channel. With the help of intelligent devices, there can be some SCADA system, that is the supervisory control and the data acquisition system. So now this is how your all system is connected with each other. SCADA की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो SCADA को अगर हम देखें तो it is the abbreviation of supervisory control and data acquisition system. Data acquisition का मतलब है कि जो डाटा आप ले रहे हैं from your intelligent devices which are installed on your transmission and distribution, और उसको आप remotely areas पे यानी दूर from far off areas मॉनिटर कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम. जितने भी यूटिलिटीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, दे आर नाउ यूजिंग दिस SCADA सिस्टम टू डिटेक्ट द करंट फ्लो एंड द लाइन वोल्टेजेस, कि कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो मैन पावर की मदद से देखना ना पड़े, बल्कि आपके जो फार अवे जो आपके सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं, जो आपके सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, उधर वो आपके पास डाटा आ जाए और उस रिमोटली आप उसको मॉनिटर भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके. सो अगर आप प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर कोई भी आपने कंट्रोल करना है किसी भी फॉल्ट को, कोई भी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, तो इट मींस दैट यू हैव टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम. जैसा कि अगर आपको याद हो तो अपने पुराने लेक्चर्स में हमने कोई सिमेट्रिकल फॉल्ट का जिक्र किया, इसके अलावा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का जिक्र किया. जब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का जिक्र किया तो हम फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करते थे. फॉल्ट करंट को कैलकुलेट क्यों करते थे? तो हमने कहा कि यू नो दैट S इज इक्वल टू VI एंड I इज इक्वल टू S ओवर V. तो फ्रॉम द फॉल्ट करंट आपको पता होना चाहिए कि MVA रेटिंग किसी भी प्रोटेक्शन स्कीम की जो आपने डिजाइन करना है वो कितनी होनी चाहिए. जब इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर सेमेस्टर में आपने सर रेहान से PSP पढ़ी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं और डिफरेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट जोन के लिए अप्लाई किए जाते हैं. जोन मींस कि खास एरिया के लिए वो प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन की जाती है, उस एरिया के बाहर वो ऑपरेट नहीं करती. फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है फ्रॉम योर रचना यूनिवर्सिटी अप टू ओजला ब्रिज, तो उधर के लिए आपने कोई ब्रेकर्स वगैरह लगाए हैं, तो इस जोन के लिए आपने प्रोटेक्शन स्कीम लगाई है, तो इट मींस कि दे विल हैव टू ऑपरेट ओनली फॉर दिस जोन ऑफ प्रोटेक्शन. दिस इज वन फर्स्ट जोन ऑफ द प्रोटेक्शन. इसके अलावा आपने कुछ और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं, वो ओजला पुल से लेके GT रोड तक के लिए आपने डिजाइन किए हैं, तो दिस इज द सेकंड जोन ऑफ द प्रोटेक्शन स्कीम. सो यू हैव टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंट circuit breakers, and you have to take the sections of the power grid online or offline, and then you have to gather the data, and then you have to analyze the real time data. आप फोरकास्टिंग नहीं कर रहे बल्कि आपने रियल टाइम जो डाटा है उसको एनालाइज आप करना है. एंड देन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन होगी इट विल बी टू वे इंफॉर्मेशन, एंड यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बैक टू अ रिमोट एरिया और द सेंट्रल साइड. जैसा कि एक आपके पास मॉनिटर होता है विच इज एक्टिंग लाइक अ सर्वर, और वो बाकी सारे मॉनिटर्स को भी कंट्रोल कर रहा है और इंफॉर्मेशन सारी सर्वर में पहुंची जाती है. द सेम इज द फिनोमेना है कि जो आपकी सेंट्रल साइट है, जो जितनी भी आपने डाटा एनालाइज की है या गैदर किया है, वो आपका एक रिमोट एरिया में या जो सेंट्रल साइड है उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है. उधर आप एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी अपनी प्रोटेक्शन स्कीम को आप रिमोटली आप उसको ऑपरेट करवा सकते हैं.
So in SCADA system, there are the 4 components. There can be some field instrumentation. There can be some remote telemetry units, which is related to your communication network. अगर communication network की हम बात कर रहे हैं, तो in communications there can be some utilization of the different protocols as well. And it will depend upon the scenario कि आप कौन सा communication two-way communication network के लिए कौन सा protocol use कर रहे हैं. And now you are seeing the elements of the SCADA system in a simple diagram. This is the IED. IED intelligent electrical devices है आपके पास. It can be in the form of relays or some other digital devices as well, जो आपको information दे रही हैं आपके central monitoring station तक with the help of this IED. और this is the instrumentation या protection scheme. तो communication network के through आपकी ये जो IEDs हैं आपको इस central monitoring station तक information provide कर रहे हैं that how you have to analyze and control the protection system. So this is the and then जो आपके पास central monitoring station है इसको हम master terminal units भी कह देते हैं. और इसी तरह master terminal units होते हैं. There can be some slave terminal units which are depending on the master terminal units. This will be beyond our scope of discussion. So field instrumentation, these are the devices which are used for the monitoring and controlling for each parameters. There can be different relays and there can be different sensors. There can be some analog and there can be some digital one, and they directly interface with the many systems, and these devices are connected to your remote stations, which is also known as RTU, that is remote terminal stations, or sorry, remote terminal units. Remote telemetry and terminal units, they are small computerized units which are deployed in the field at some specific sites and the locations, and RTU serve at local connection points for gathering reports from the sensors and delivering command to the control relay. As you know that कि आपकी relay जो है simple sensing device है जो fault को sense करती है और circuit breaker तक signal send करती है. Now it will also send signal to the circuit breaker, and with the help of intelligent electrical devices there will be some signals at the MTU remote end as well. So receiving data and control signals from MTU and transmitting the control signals to the plant devices as well. So this is the remote terminal units, and these are the inputs and the outputs for your RTU. That these are getting the inputs from your field devices, signals of meters, alarm switches, field analog devices, and equipment status, and there can be some serial messages as well. Then there are some outputs from this RTU that is in the form of signals of alarms. They can be digital and there can be some analog as well, and there can be some different status and the messages. And similarly, there can be some inputs from the MTU and there can be some outputs to the field devices as well. So this is the function of your basic remote terminal unit. Now, if you are talking about your communication network, तो जो communication आपका network है वही जैसा कि हमने पहले जिक्र किया आपके MTU और RTU remote telemetry unit और जो master terminal unit है उसको आपस में connect करता है. And there can be some different techniques. There can be some modulation, there can be some multiplexing, there can be some message format, and there can be some information transfer as well. ये अगर आपने कोई अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट पर है तो उसमें आपने मॉड्यूलेशन या मल्टीप्लेक्सिंग या आपने सिग्नल प्रोसेसिंग का अगर एक पढ़ा या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP के नाम से अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें आपने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी कि ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं या कैसे हम कन्वर्जन करते हैं एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग हम कैसे करते हैं, एंड हाउ डिफरेंट noises and different signals are monitored. So आपका जो central monitoring station है, it is also considered as the heart of the system, and the main functions are communication, gathering data, storing the information, sending the information, and then you have to process the data which are gathered from the remote stations to generate the necessary actions.
Then interfacing to the operators, mainly it can be with the help of some monitors and printers, and these are the inputs and the outputs of the MTU. So let's suppose this is some example of this SCADA system, and you are seeing that you are getting some real-time values, that how much kilowatt for the line 1 and how much kilowatt there is for line 2, how much megawatts are sending, receiving, and how much reactive power is there. ये आपको जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दी गई थी उसमें भी आपने ये डाटा एनालाइज करना सीखा होगा कि कैसे हम रियल टाइम में डाटा गैदर करते हैं. Then there can be some distributed energy storage which can help the grid to remain the stable. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि different fuel cells या different renewable energies, आजकल अगर आप में से अगर आपने सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स देखे हों तो उन्होंने माइक्रो टरबाइन पे भी काम किया है कि कैसे डिफरेंट टरबाइन इंस्टॉल की जाती हैं जो ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड पे लगाई जाती हैं ताकि आपका जो वोल्टेज लेवल है वो डिक्रीज ना हो और वो ज़्यादा आपका जो वोल्टेज डिप ना आए और आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा डिक्रीज कर जाए. इसके अलावा विंड एनर्जी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देयर कैन बी सम different fuel cells like biomass and solar panels, etc., which can be used at the distribution end as well. So this is the snaps that how you are using the different grid station, and this is your power plant. There are some other power plants and the consumers. These are the houses, these are the factories, and these are some energy storage facilities, and you are seeing that it is getting the power and it is also delivering the power. So the power plants and consumers are two ends now, two-way now, sorry. Two-way means कि वो electricity को utilize भी कर रहे हैं और similarly in case कि उन्हें electricity की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने grids को provide भी कर रहे हैं. So there are the different advantages. You have to see कि कुछ रिलायबल हैं, कुछ इकोनॉमिकल हैं, कुछ एफिशिएंट हैं, कुछ एनवायरमेंटल हैं, कोई सेफ्टी है, कुछ की सिक्योरिटी ज़्यादा है. There are the different advantages of the DGs as well. And there can be some automatically rerouting and the restoring as well. So with respect to the economy, you are seeing now there are some power line communication के बाद, smart grid के बाद, now we are moving towards the electrical vehicle, which are incorporating rechargeable batteries. Rechargeable batteries जो आपकी है उसके लिए जाहिर सी बात है आपको कोई स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ आपके पास रिन्यूएबल या आपको डीजीज इंस्टॉल करने पड़ेंगे with the help of which you have to charge your electrical vehicles, and it will be two ends as well कि वो पावर ट्रांसमिशन टावर को एनर्जी प्रोवाइड भी कर सकते हैं इन केस कि वो कोई भी कंज्यूमर नहीं है. This is the future. So these are the different efficiencies that how they are the different substation transformer, capacitor bank, ring main unit with RTU. That is you have a remote telemetry unit. There can be some sectionalizer switch. Sectionalizer switch are the different switches with the help of which you have to differentiate between the different sections in case of any fault. जैसा कि जब हमने circuit breaker scheme देखी थी, double circuit breaker scheme या 1.5 circuit breaker scheme, तो उसमें हमने देखा था कि with the help of different sectionalizer switch हम different sections को isolate कर सकते हैं. So these are the environment friendly, and this is how you are charging your electrical vehicles. There can be some generators, motors, and transmission. These are the bottom material, interior system. There can be some crash system and so on. And this is your DGs and energy storage. जिसको हम distributed generation का नाम भी देते हैं with the help of some renewables. And this is your data management system, and this is your efficient building system, and which are providing the electricity to your transmission end as well. So this is the figure which are showing the fault detection, isolation, and restoration in your feeders, etc. And this is how your system has become more reliable
and more secured as compared to your previous one, as all are connected to your intelligent devices which are sending signals to your MTU. Now there are the different applications of the smart grid. For example, mitigating impacts of plug-in hybrid and battery electrical vehicles nowadays, and allowing the implementation of vehicle to grid as well, which is the V2G strategies. Similarly, there can be some application for the optimal operation and control of the distribution systems, and we are allowing the implementations of microgrids now. For example, this is the case study for you. That is the smart grid at the Austin Energy, Texas, USA. जो पहला पार्ट था ऑस्टिन एनर्जी प्रोग्रामर का, which is also known as Smart Grid 1.0, which has been concluded at the end of 2009, which focused on the utility side of the grid, going from the central power plant to the transmission and distribution and all way to the back to the meter. And the it used the generation mix including some nuclear, coal, natural and renewable energy for a total of 2600 megawatt, and there was some plan to obtain 700 megawatt of energy efficiency and share of 30% of renewable energy in the generation portfolio, of which 100 megawatt is coming from the solar. So this was the plan to be done up to 2020. I don't know the exact position कि अभी तक ये complete हुआ है या नहीं. Let's see. And this is the case study fact sheet, year of foundation, number of employees, and total turnover in the last financial year, and so on. This is how we sum up of all the case study in a fact sheet. So this was the recommendation for the future कि आपकी जो smart grid technologies हैं उनकी development और deployment after the 2009 उसको carry on किया जाए, और जो vision है electricity system का, which is not only provide service but also interacts and communicates with the end users. So our country should towards this technology to get the reliability between the providers and the user as well. ये उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी 2009 में कि फर्दर एवेल्युएशन ऑफ स्टेक होल्डर फीडबैक होना चाहिए. There can be some further investigation and analysis of the risk and the challenges organizations, and there can be some review progress toward the resolving smart grid challenges. So concluding our smart grid communication और information को ज़्यादा effectively utilize करती है with the objective कि हमारा जो power सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल हो, एफिशिएंट हो, और अपनी जो एनवायरनमेंट है उस पे जो अपनी इम्पैक्ट है